अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप जानना चाहते हैं हाउ टू मेक अ वेरी गुड बेक्ड फिश फॉर ब्रेकफास्ट एंड हाउ टू पोच एग्स like professionals, like a success every time, then keep watching. Well, today is Saturday and I am making a brunch for me and my husband. My son is not interested in brunch at all. So I am making brunch for two people, and in the brunch I am going to make baked salmon with very little spices but with a lot of flavor, and I am going to poach eggs with them. First of all, I am going to season salmon and I am going to put that in the oven, so by the time I poach the eggs ये बेक हो जाएगी। और मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट सीजनिंग आई यूज़, इट इज़ अ वेरी लेस स्पाइसेस बट इट इज़ फुल ऑफ फ्लेवर्स, कि वो जो फ़िश का अपना जायका है वो उसमें मौजूद रहता है विद अ वेरी गुड टेस्ट। I always bake salmon like that whenever I'm making it for breakfast. It goes so good with eggs and avocado and other things that you eat with breakfast. So let's season the fish first and put that in the oven. Oven में जा चुकी है. I will bake it for about 30 minutes because we eat it well done. We don't eat it rare, medium or rare, so we cook it well. So it takes about 30 minutes for the pieces that bake to get well done properly. So by the time, let's poach the eggs. जी अच्छा जी, now for poaching the eggs मैंने लिया है ये कोई आधा देगची पानी. And now I'm going to add about 1 tablespoon of white vinegar in that. There are few tips and tricks for poaching the eggs, and trust me that using those tricks you will get success every time, and then you can go to the master chef in whatever country you are. Well, jokes apart, but these tips and tricks really work. So the trick number 1 is that कि आप पानी को बिल्कुल उबलने नहीं दें. जब भी आप एग पोच कर रहे हो तो आप उसको बिल्कुल बॉयल नहीं करें पानी को, बल्कि ऐसे टेम्परेचर पे चूल्हा आहिस्ता कर दें कि आपको फील हो रहा है कि जब छोटे छोटे बबल्स उसके बॉटम में बनना शुरू हों, देन यू शुड टर्न द हीट डाउन, ताकि वो बिल्कुल खौलते हुए पानी में आप जब एग्स डालें तो वो बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी ना हो. वेल, द टिप नंबर 2 फॉर पोचिंग परफेक्ट एग्स इज़ दैट कि आप जितने भी अंडे बनाना चाह रहे हैं, लाइक टुडे आई एम मेकिंग 4 एग्स, तो उन तमाम अंडों को आप छोटी प्यालियों में अलग अलग तोड़ें. इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो एग है वो अपना शेप कायम रखेगा, इट विल बी राउंड एंड नाइस. दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप उनको जल्दी जल्दी से ड्रॉप कर सकते हैं पानी में, और उनका जो टेम्परेचर है, कुकिंग टेम्परेचर, वो वेरी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, एंड दे विल ऑल कुक ऑल टुगेदर very nicely. So these are few tips I have to make perfect poached eggs. Like this, I have placed all eggs in separate small bowls and now I will drop them in the water. लेकिन पानी में इनको डालने से पहले तो क्या करना है कि you have to make a swirl in that water like that. इससे ये होगा कि जब आप अंडा पानी में डालेंगे तो वो खुद ही अपने इर्द गिर्द रैप हो जाएगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड egg in that one by one.
Now they are getting cooked. It takes about 3 to 3.5 minutes for the poached egg to be cooked nicely. अब nicely cooked poached egg का मतलब ये होता है कि उसकी egg yolk रनी होनी चाहिए और उसकी white cooked होनी चाहिए अच्छी सी. The poached eggs are getting done. और इनको निकालने से पहले जैसे ही 3 मिनट हो जाएंगे तो आपको किचन टॉवल हैंडी रखना चाहिए, बिकॉज वी टेक देम आउट ऑन द किचन टॉवल. वो सारा इसका जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. फिर उसके बाद आप उसको सर्विंग प्लेट या सर्विंग प्लेटर जिसमें भी आप इसको सर्व कर रहे हैं फिर आप उसमें ट्रांसफ़र करते हैं. एक अंडे में से 2 जर्दियाँ निकली हैं. एंड आई whenever it happens I really feel very happy. I don't know कि आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब एक अंडे में से 2 जर्दियाँ निकलती. तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके हैं. आई एम गोइंग टू फ्लिप दैम ताकि वो तमाम साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए. जी ये यहाँ पे बन रही है चाय और आई एम गोइंग टू मैश एवोकाडोज बाय द टाइम द टी बॉइल्स एंड आई एम गोइंग टू टोस्ट द ब्रेड. अच्छा जी, now let me show you. The fish is ready. The poached eggs are ready. Mashed avocados are ready. Well, the brunch is ready. I'm going to enjoy that with my husband and with my son. Or if you like this video, please hit the like button. Subscribe to my channel for more interesting videos. Apna ख्याल रखिएगा. Bye till the next video.